इस डीवीडी में डॉक्टर किप जॉनसन की फाउंडेशन ऑफ हेल्दी एजिंग पर दी गई बहुत ही रोचक तथा इन्फॉर्मेशन से भरपूर टॉक को कवर किया गया है। डॉक्टर किप जॉनसन जो कि डॉक्टर ऑफ मेडिसिन है UCLA से, उनके पास 20 सालों से भी ज्यादा का प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में एक्सपीरियंस है। उन्होंने सेंट जूड हॉस्पिटल में 13 वर्षों से ज्यादा तक इमरजेंसी मेडिसिन में काम किया है तथा उसके बाद उन्होंने वर्षों तक फैमिली प्रैक्टिस फॉलो की। लगभग 2 दशकों तक डॉक्टर किप जॉनसन ने विटामिन तथा सप्लीमेंट पर निर्माण तथा उत्पादन में लेकर उनकी गुणवत्ता तथा उपयोग पर शोध किया है। उन्होंने अपने समृद्ध अनुभव से प्राकृतिक उपचारों पर कई प्रकार के लोकप्रिय सेमिनार बनाए हैं तथा प्रिवेंटिव मेडिसिन एवं स्वास्थ्य बहाल करने के प्राकृतिक तरीकों पर काफी लेक्चर भी दिए हैं। उन्होंने कई किताबों को लिखने में अपना योगदान दिया है और विटामिन सप्लीमेंट्स एवं कंप्लीट वेलनेस के अनेक प्रोग्रामों को डेवलप किया तथा उनको कई ऑर्गेनाइजेशंस एवं अस्पतालों में इम्प्लीमेंट करा। Hello. I'm Dr. Kip Johnson. I'm an advisor at Nutrilite Health Institute at the COH, and I'm here to share with you some really hopefully useful information having to do with healthy aging. मेरा नाम डॉक्टर किप जॉनसन है और मैं डायरेक्टर हूँ न्यूट्रीलाइट हेल्थ इंस्टीट्यूट में, और मैं आज आपसे कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है अपने आप को स्वस्थ कैसे रखना है। Aging is a natural process. It's part of life. एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, ये जिंदगी का एक हिस्सा है। But healthy aging is a choice. लेकिन हेल्दी एजिंग जो है वो एक चुनाव है। What I hope to help you understand is what choices that you can make to age in a healthy way. मैं आपको यह समझाना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी चॉइसेस है जो आपको जिंदगी में हेल्दी एजिंग में मदद करेगी। We have a lot of information to cover, so let's get started. We'll be talking about a number of items, including optimal health. We will define optimal health and describe the elements of optimal health. हम लोग काफी चीजों के बारे में बात करेंगे। हम आदर्श स्वास्थ्य ऑप्टिमल हेल्थ के बारे में बातें करेंगे और बताएंगे कि वो क्या है और किन चीजों से बनता है। Then we'll delve into some of those elements in more depth to explain them. फिर हम उन चीजों के बारे में थोड़ा और गहराई से बात करेंगे। Then we'll talk about aging theories फिर हम लोग जो है एजिंग थ्योरीज के बारे में बात करेंगे and the qualities of healthy aging. और हम बात करेंगे ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं जो आम आदमी की अच्छी एजिंग करती है, उसकी हेल्दी एजिंग करती है। Then we'll take a look at the population distribution in India and see what the future holds. हम लोग बात करेंगे कि भारत में जो हमारी जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है और उससे क्या चीजें किन चीजों में फर्क पड़ता है। We'll then explore some of the health issues that are associated with aging and see if any of those are pertinent to India. हम लोग कुछ ऐसे हेल्थ इश्यूज के बारे में बात करेंगे जिनका संबंध इंडिया से है और हम उनके बारे में थोड़ा और बात करेंगे आपसे। Finally, we'll take a look at what lifestyle changes and what supplements might be used to make a difference in that aging process. और हम लोग बात करेंगे कि ऐसे कौन से लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट्स हैं जो आपको करने पड़ेंगे एक हेल्दी एजिंग के लिए। So first, let's talk about what is optimal health. पहले हम बात करेंगे कि ऑप्टिमल हेल्थ क्या है। This is the center of optimal health in Buena Park, California. ये सेंटर ऑफ ऑप्टिमल हेल्थ है बोना पार्क कैलिफोर्निया में। As you can see on the left, there is the commitment to the Color Yourself Healthy campaign. जैसा कि आप लेफ्ट हैंड साइड पर देखेंगे, यहाँ पर हमारा एक कमिटमेंट है कलर योरसेल्फ हेल्दी कैंपेन में। Because consuming a variety of different colors of fruits and vegetables will always be the basis of good health. क्योंकि अगर हम लोग जो है फर्क रंग की सब्जियां और फ्रूट्स खाते हैं तो ये एक बहुत अच्छी बेसिस है हमारी अच्छी हेल्थ के लिए। But if you go through those double doors and turn directly to your left, you'll see this information. लेकिन जैसे ही आप उन डोर से अंदर जाएंगे और लेफ्ट पे देखेंगे तो आपको ये दृश्य दिखाई देगा, ये इंफॉर्मेशन दिखाई देगी। This is Nutrilite's statement having to do with optimal health. ये न्यूट्रीलाइट का स्टेटमेंट है, हमारा मिशन स्टेटमेंट है ऑप्टिमल हेल्थ के बारे में। This is what it says. ये कहता है Optimal health compels you to choose every day to be your best by selecting the right foods and supplements, engaging in exercise and rest, and by incorporating healthy habits and balance in everything you do. ऑप्टिमल हेल्थ एक चुनाव है, ये मजबूर करता है आपको हर रोज चुनाव करने का कि आप जो है सही खाना खाएं, सही सप्लीमेंट्स लें और हर रोज जो है एक्सरसाइज करें, प्रॉपर रेस्ट दें और अच्छी आदतें और लाइफ में एक बैलेंस रखें। So let's break it down and talk about each of those elements one at a time. अब हम उन एलिमेंट्स को अलग-अलग बात करेंगे उनके बारे में। First of all, right foods and supplements, सबसे पहले सही खाना और सप्लीमेंट्स, exercise, एक्सरसाइज, rest, प्रॉपर रेस्ट and then healthy habits and balance.
और सही आदतें और लाइफ में बैलेंस। When we talk about right foods, we have to look at how the World Health Organization looks at food in general around the world. जब हम खाने की बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो खाने को किस प्रकार से देखती है पूरे संसार में। In February of 2011, World Health Organization made this statement. 2011 में WHO ने ये स्टेटमेंट दिया था। Malnutrition is the gravest single threat to the world's public health. मेल न्यूट्रिशन यानी पोषक तत्वों का कम होना जो है वो सबसे बड़ा खतरा है दुनिया की पब्लिक हेल्थ को। Improving nutrition is widely regarded as the most effective form of aid. अगर हम पोषक तत्वों की मात्रा अपने खाने में बढ़ा दें तो वो सबसे इफेक्टिव तरीका है इस चीज से बचने का। Food is fuel for our bodies. खाना जो है एक प्रकार का फ्यूल है हमारी बॉडी के लिए। We have to take in good sources of proteins, carbohydrates, and fats. हमें अच्छे सोर्सेज चाहिए प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स के अपने खाने में। If we take in those good sources, then we'll also get vitamins, minerals, and phytochemicals that are very beneficial to our health. अगर हम वो अच्छे सोर्सेज से ये चीजें लेते हैं तो हमें विटामिन, मिनरल्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी अपने खाने में मिल जाएंगे। The recommendation is for 9 to 13 servings of the 5 color groups of fruits and vegetables on a daily basis. जो 5 मुख्य कलर ग्रुप्स हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के, उनकी हमें 9 से 13 सर्विंग्स हर रोज चाहिए खाने में। That's to make sure we get all of the nutrients that we need. उससे हमें सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो मिल सकते हैं अपने खाने में। When we can't do that because we're busy at times, then we can supplement to fill in the gaps. अगर हम वो प्रॉपर सर्विंग्स नहीं ले पाते किसी कारणवश, तब हमें सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं अपने खाने के न्यूट्रिशनल गैप्स को भरने के लिए। Also, part of the right foods is proper hydration. अच्छे खाने का एक बहुत अहम जो है हिस्सा वो है हमारा प्रॉपर हाइड्रेशन, कितना पानी हमारे बॉडी में है। 99% of all of the chemical reactions in the body involve water. 99% केमिकल रिएक्शंस बॉडी में जो होते हैं उसमें वाटर का होना जरूरी है। So we have to make sure those cells are healthy so those reactions can go efficiently. तो सेल्स का हेल्दी रहना बहुत जरूरी है ताकि वो केमिकल रिएक्शन सही प्रकार से हो। Next on our list was exercise. दूसरा एक्सरसाइज। We were designed to move. हम लोगों को भगवान ने डिजाइन किया है चलने फिरने के लिए। That's why we have muscles and joints and not roots. तभी हम लोगों के पास मसल्स और जॉइंट्स हैं बजाय रूट्स के। The current recommendation is for 20 to 60 minutes of moderate to vigorous intensity physical exercise daily, most days of the week. जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि कम से कम 20 से 60 मिनट जो है हर रोज हमें विगरस इंटेंसिटी की फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए हर दिन, सप्ताह में कम से कम 4 से 5 दिन। But recent research shows something that is very interesting, and that is that we can actually divide up that exercise into 10 to 15 minute segments and still get the benefit. लेकिन जो रिसेंट रिसर्च है वो ये दिखाते हैं कि वो जो 60 मिनट हैं उसको हम दिन भर में डिवाइड कर सकते हैं 10 से 15 मिनट के भागों में, ताकि हमें पूरी एक्सरसाइज जो है वो भागों में मिल सकती है। It doesn't all have to be done at the same time. सारा का सारा एक साथ नहीं करना है हमें। Sean Foy at Nutrilite has developed the 4-3-2-1 plan, dividing exercise into 10-minute segments. शॉन फॉय जो है न्यूट्रीलाइट के एक्सपर्ट है, उन्होंने 4-3-2-1 प्रोग्राम डिजाइन किया है जिसमें आप जो है 10 मिनट का एक एक्सरसाइज का सेगमेंट जो है अपने लिए डिजाइन कर सकते हैं। You also should include resistance exercise to build muscle, because muscle is very important in determining our metabolic rate. आपकी एक्सरसाइजेस में रेजिस्टेंस भी होनी चाहिए ताकि उससे मसल्स डेवलप हो, बिकॉज़ उससे हमारी बॉडी जो है वो ठीक रहती है। What is the main reason that people give for not being able to exercise? सबसे जो बड़ा एक्सक्यूज है वो लोग क्या देते हैं कि हम एक्सरसाइज क्यों नहीं कर पाते? टाइम नहीं है। Time. That's always the first reason that people give. We'll talk more about that in a few minutes. सबसे नंबर रीजन यही है लोग देते हैं, इसके बारे में हम लोग और बात करेंगे। Next on our list is rest. दूसरा हमारी लिस्ट पे है प्रॉपर रेस्ट। Study after study shows that the average person needs between 7 and 8 hours of sleep every day. स्टडीज जो है वो बताती हैं कि एक नॉर्मल आदमी को 7 से 8 घंटा हर रोज जो है सोने का टाइम मिलना चाहिए, प्रॉपर रेस्ट मिलना चाहिए। When we're asleep, a variety of different reactions take place in our body that are very important. जब हम सो रहे होते हैं तो उस वक्त हमारे बॉडी में कई रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो बहुत जरूरी होते हैं। The calcium gets moved around.
कैल्शियम जो होता है वो बॉडी में यहाँ से वहाँ मूव होता है उस टाइम में। Most of our brain chemicals get built and restored. हमारे जो ब्रेन है उनके बहुत सारे केमिकल्स बनते हैं और रिस्टोर होते हैं उस दौरान। Our tissues and muscles get repaired. हमारे टिश्यूज और मसल्स जो है उनका रिपेयर वर्क होता है सोने के टाइम पे। So it's important that we get sufficient amount of rest. इसलिए सही रेस्ट जो है बहुत जरूरी है हमारे लिए। Studies were done on healthy young college students, and a study was done to sleep deprive them for just a matter of days. हम लोगों ने कुछ स्टडीज करी थी जिसमें कॉलेज स्टूडेंट्स जो थे उनके ऊपर एक्सरसाइज करी थी और उनको कुछ टाइम के लिए बिना सोए मतलब स्लीप डिप्राइव रखा गया था। What was discovered was something that was very surprising. उस टाइम पे कुछ ऐसी बातें दिखाई दी, सामने आई जो बहुत ही चौंका देने वाली थी। In a matter of just a few days, these healthy young college students were having chemical changes that were measurable, that showing a beginning of insulin resistance. कुछ ही टाइम पे ये सारे के सारे जो हेल्दी कॉलेज स्टूडेंट्स थे उनके बॉडी के अंदर कुछ ऐसे सिम्टम्स आ गए थे कि उनके बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस के सिम्टम्स आने शुरू हो गए थे। But just to be aware, we'll talk more about the insulin resistance, but these changes take place very quickly if we're not doing what we need to do for our bodies. ये खराब चेंजेस जो है बॉडी में बहुत जल्दी आ सकते हैं अगर आपको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल रहा है। What's the main reason why people cannot get enough sleep? नंबर 1 क्या रीजन क्या है कि लोग क्यों नहीं सो पाते हैं जितना सोना चाहिए? Not enough time. टाइम नहीं है। So we don't have enough time to exercise, and we don't have enough time to rest. तो हमारे पास प्रॉपर टाइम नहीं है ना तो एक्सरसाइज करने का और ना सही प्रकार से रेस्ट करने का। Something's wrong with that. कुछ गड़बड़ है इस चीज में। Sounds like we have a problem with priorities. शायद हम लोगों की लाइफ पे प्रायोरिटीज जो है वहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। Let me tell you something I learned a number of years ago that I hope will be helpful to you. मैं कुछ आपको बताऊंगा कुछ चीजें जो मैंने लाइफ में सीखी थी जो शायद आपके काम आ जाए। I was very busy in my medical practice working in emergency medicine. मैं अपनी प्रैक्टिस में इमरजेंसी मेडिसिन में जब काम कर रहा था हॉस्पिटल में बहुत बिजी था। We had 6 children, and they were all busy in different types of activities. मेरे 6 बच्चे थे और वो सब के सब हम लोगों को बहुत ज्यादा बिजी रखते थे अपनी एक्टिविटीज में। My usual shift in the emergency room would last about 15 hours. मेरी एक शिफ्ट इमरजेंसी रूम में कम से कम 15 घंटे लंबी होती थी। So I said to myself, I don't have enough time to exercise or sleep. तो मैं अपने आप को ये बताता था कि मेरे पास टाइम नहीं है ना तो एक्सरसाइज करने का ना सही प्रकार से सोने का। But I knew that I should, so I decided to make a change. लेकिन मुझे पता था कि मुझे करना चाहिए तो इसलिए मैंने कुछ परिवर्तन अपनी लाइफ में किया। I began exercising regularly and began getting a good night's sleep. मैंने एक्सरसाइज शुरू कर दी और अपने आप को प्रॉपर रेस्ट देना शुरू किया रात में। The thing that surprised me was that I was redeemed back all of that time by improved efficiency and improved energy. लेकिन मेरे को ये बहुत सरप्राइज हुआ कि ये सब करने से जो मेरी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी इंप्रूव हुई उसमें वो सब टाइम जो मैंने खो दिया था एक्सरसाइज करने की वजह से वो सब मुझे वापस मिल गया वापस। I lost no time at all. In fact, I really gained time because I was so much more efficient. तो मेरा टाइम लूज नहीं हुआ लेकिन मुझे वापस टाइम मिल गया वापस। So I share that with you because hopefully it'll be helpful to you. तो मैंने आपके साथ शेयर किया बिकॉज मुझे लगता है कि शायद ये चीज आपके भी काम आ जाए। When we talk about rest, we also should talk about relaxation. जब हम रेस्ट के बारे में बात करें तो वी शुड आल्सो टॉक अबाउट हम लोगों को रिलैक्सेशन के बारे में बात करनी चाहिए। We all live in a very stressful world. हम लोग बहुत ही स्ट्रेसफुल दुनिया में रहते हैं। And some of the things that we need to do, we need to spend time relaxing to get rid of some of that stress. तो हम लोगों को कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिसमें हम लोगों को रिलैक्सेशन हो ताकि वो स्ट्रेस जो है वो कम हो जाए। The next on our list was healthy habits and balance. दूसरा हमारी लिस्ट में था एक स्वस्थ आदतें और एक बैलेंस लाइफ में। We have to maintain those healthy habits and keep balance in all areas of our life and make that a priority. हमें कुछ अच्छी आदतें रखनी चाहिए और लाइफ में हर चीजों में एक संतुलन बैलेंस रखना चाहिए। One of the other things that's important is a positive mental attitude. पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बहुत जरूरी है। Our minds have an awful lot to do with our bodies and therefore our health. हमारा माइंड जो है हमारी बॉडी से कनेक्टेड है इसलिए हमारे माइंड का सीधा कनेक्शन हमारी हेल्थ से है। What we really want to have is mental, emotional and physical well-being. हम लोगों को अपने आप को स्वस्थ रखना है मेंटली, इमोशनली और फिजिकली। Now these are all the basis of optimal health. ये सब चीजें जो है बहुत जरूरी हैं ऑप्टिमल हेल्थ के लिए। And these are also the basis of healthy aging. और यही सब चीजें बहुत जरूरी हैं जैसे जैसे हम लोग जो है उम्रदराज होते हैं अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। Because we build on healthy aging based on optimal health. क्योंकि हम लोग जो है हेल्दी एजिंग जो है उसकी बेसिस जो है वो ऑप्टिमल हेल्थ है। Now,
Anytime you begin on the road to optimal health, you will get benefit. जब भी आप लोग जो है ऑप्टिमल हेल्थ की तरफ बढ़ेंगे तो आप अपने आप हेल्दी एजिंग भी होगी. There are actually measurable physical and laboratory benefits within days of changing your lifestyle and improving your lifestyle. कुछ ऐसे मेजरेबल बेनिफिट्स हैं जिसको आप क्वांटिफाई कर सकते हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगे जैसे ही आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे ऑप्टिमल हेल्थ की तरफ बढ़ेंगे. But the sooner you start, the more benefits that you're going to get. लेकिन वो शुरुआत जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है. As we age, we have more years and more time to be exposed to pollution, to pathogens that cause disease, to injury, to just general health issues. So as time goes on, we have those exposures. उम्र के साथ साथ हम लोगों का जो एक्सपोजर है वो बढ़ जाता है कुछ ऐसे चीजों की तरफ जिससे हमारी एजिंग जो है वो खतरे में पड़ जाती है जैसे केमिकल्स एक्सपोजर हो जाता है कुछ ऐसी चीजें होती है पैथोजेंस जिससे हमारी उम्र जो है वो हमारी एजिंग जो है वो खराब हो जाती है. If we live an optimal health lifestyle, there's less damage done, and the earlier we start, the better off that we are in our health. जैसे जैसे हम लोग ऑप्टिमल हेल्थ की तरफ बढ़ते हैं तो उन चीजों का जो खतरा है वो कम हो जाता है और हमारे को एक अच्छी शुरुआत मिल जाती है. Don't wait for a disease to start. कभी भी बीमार पड़ने का इंतजार मत करिए. I worked for a number of years in an emergency room and saw more than 80,000 patients in emergency care. मैंने कम से कम 80,000 पेशेंट्स देखे हैं इमरजेंसी रूम में केयर में. My patients taught me something very important. मेरे पेशेंट जो है उन्होंने हमेशा बहुत कुछ मुझे सिखाया. Too many patients that I saw did not really value their health until they were beginning to lose it. पेशेंट जो थे बहुत सारे वो अपने स्वास्थ्य को कभी भी वैल्यू नहीं करते जब तक कि बहुत देर ना हो चुकी हो तब तक. Value your health, it is so important, but value your health now so you can preserve it as long as you possibly can. अपनी जो हेल्थ है अपना जो स्वास्थ्य है उसको आप वैल्यू करिए जितना जल्दी से जल्दी हो सके ताकि आपको आगे लाइफ एंजॉय करने को मिल सके. There's a number of theories having to do with healthy aging. बहुत सारी थ्योरीज हैं हेल्दी एजिंग के बारे में. Some of these are biological, some of them are hereditary. कुछ बायोलॉजिकल हैं और कुछ ऐसी हैं जो जेनेटिक हैं, हेरिडिटरी हैं. None of them has come to the forefront as being the best theory. कोई भी थ्योरी ऐसी नहीं है जो एकदम बेस्ट हम लोग कह सके हैं. So it's probably, in all honesty, a combination of these theories that actually is the real answer to what aging is all about. तो सब थ्योरीज का एक कॉम्बिनेशन है जो सही आंसर है हेल्दी एजिंग के लिए. I won't go into detail, but just suffice it to say that there's a number of aging theories. मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ बता देना चाहता हूं कि बहुत सारी थ्योरीज हैं हेल्दी एजिंग की. When we talk about healthy aging, we have to talk about what is successful healthy aging. जब हम हेल्दी एजिंग के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सक्सेसफुल हेल्दी एजिंग क्या है. And these are some of the characteristics that are thought to be healthy aging characteristics. और ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पैरामीटर्स हैं जिसको हम लोग कह सकते हैं कि हेल्दी एजिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. At age of 75, no physical disability as rated by a physician. 75 साल की उम्र में कोई भी फिजिकल डिसेबिलिटी ना हो डॉक्टर के अनुसार ये एक अच्छा कैरेक्टरिस्टिक है हेल्दी एजिंग का. At that age, you actually subjectively say you have good or excellent health. उस एज पे आप ये महसूस कर सकते हैं कि हाँ मेरी हेल्थ अच्छी है. You have a long, undisabled life. आपका एक लंबी लाइफ ऐसी है जिसमें आप बिना किसी सहारे के या सहायता के जी सकें. It's accompanied by good mental health and good social support. साथ साथ आपकी मेंटल हेल्थ जो है बहुत अच्छी है और जो एक सोशल सपोर्ट है आपके आसपास वो भी बहुत अच्छा है आपके लिए. So these are the characteristics of healthy aging. ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हेल्दी एजिंग की. So let's talk about the population statistics in India. अब हम बात करेंगे कि इंडिया की जो पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स है वो क्या है. On the left are statistics for males, on the right for females. लेफ्ट साइड पे लेडीज की स्टैटिस्टिक्स है और राइट साइड पे जो है वो आदमी लोगों की है, मेल्स की है. It starts at the bottom with the youngest ages, and it's in 5-year segments all the way up from 0 to 80 plus. उसकी शुरुआत होती है एकदम यंगेस्ट सेगमेंट से और धीमे-धीमे बढ़ जाता है ऊपर सबसे ओल्ड एज सेगमेंट का जो 80 प्लस का है. And these are in millions of population. और इसमें जो वो मिलियंस में है पॉपुलेशन की. So this is for the year 2000. ये सन 2000 का है. And you can see India had a very young population with a very big base of very young people. 2000 में आप देख सकते हैं कि हमारा पॉपुलेशन बेस जो था वो बहुत ही यंग था, बहुत बड़ा था. In 2010, started to see some increase in some of the ages above that. 2010 में आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा उम्र जो थी वो थोड़ा सा बढ़ने लगी.
The prediction for just 8 years from now आज से 8 साल आगे का 2020 का जो प्रोडिक्शन है वो ये है, is a very significant increase in the aging population. एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इंक्रीज होगा हमारी बढ़ती हुई पॉपुलेशन का। But there's also a prediction for 2050, and it looks like this. 2050 का जो प्रोडिक्शन है वो ये है कि हमारे जो बढ़ती उम्र के जो लोग हैं, काफी ओल्ड एज के जो लोग हैं, उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। You can see that the birth rate has actually decreased, but there's a very significant increase in the aging population. आप लोग देख रहे हैं कि इस वक्त इंडिया में जो बर्थ रेट है वो धीमे धीमे कम हो रहा है और लोगों की जो लॉन्जेविटी है वो बढ़ रही है। I'm going to refer back to this on occasion as we go through this information. हम लोग इस ग्राफ के बारे में बाद में रेफर करेंगे जब ऐसे हम अपने आपको समझाएंगे आगे। With aging, there are naturally health issues that occur. एजिंग के साथ साथ कुछ नेचुरल हेल्थ इश्यूज होते हैं। The foundation is always going to be optimal health to work from. हेल्दी एजिंग का जो फाउंडेशन है वो हमेशा ऑप्टिमल हेल्थ के सिद्धांत है। We want to maintain those healthy habits and balance in all areas of our lives. हम लोग जो है हेल्दी हैबिट्स जो है उनको मेंटेन करना चाहते हैं और लाइफ में हमेशा एक संतुलन रखना चाहते हैं। And in some cases, supplements may help. In some cases, they actually may be very valuable. और सप्लीमेंट जो है वो हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, कुछ केसेस में बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है हमारे लिए। So let's talk about some of the most common health issues that occur with aging. हम लोग जो है कुछ कॉमन हेल्थ इश्यूज के बारे में बात करेंगे जो बढ़ती उम्र के साथ होते हैं। The first one we'll talk about is diabetes. सबसे पहले हम बात करेंगे डायबिटीज की। Is there a problem with diabetes in India? इंडिया में क्या डायबिटीज को लेकर प्रॉब्लम है? 50.8 million people living with diabetes in India. It's the world's largest population of diabetics. इंडिया में लगभग 50.8 मिलियन पीपल यानी 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो डायबिटीज के साथ रह रहे हैं। Less than half of these people even know they have diabetes. और इनमें से आधों को ये पता भी नहीं है कि इनको डायबिटीज है। So half the people who have diabetes are not aware of it. तो आधे से आधे लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं कि इनको डायबिटीज है। At least 95% have type 2 diabetes. और 95% लोगों को टाइप 2 डायबिटीज है। These are accurate statistics from the International Diabetes Federation. ये बहुत ही एक्यूरेट सही स्टैटिस्टिक्स है इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन से। An article in the Hindustan Times also confirmed this, that it has the highest number of diabetic patients in the world. और हिंदुस्तान टाइम्स अखबार के एक रिसेंट आर्टिकल में ये एक चीज कंफर्म हो गई कि इंडिया में सबसे ज्यादा डायबिटिक पेशेंट्स दुनिया के हैं। But actually it's even a bigger problem than that. लेकिन ये तो प्रॉब्लम है, ये उससे भी बड़ी है। Because Dr. Mishra, the director of diabetes and metabolic diseases at the Diabetes Foundation in India, noted that the average age of onset among Indians is about 10 years younger than in the West. डॉक्टर अनूप मिश्रा जो डायरेक्टर है डायबिटीज एंड मेटाबॉलिक डिजीजेस के डायबिटिक्स फाउंडेशन ऑफ इंडिया के, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि इंडिया में बाकी देशों की तुलना में जो डायबिटीज है वो 10 साल पहले शुरू हो जाती है बजाय और देशों के। It actually occurs about age 45 in India. एक्चुअली 45 साल की उम्र तक डायबिटीज के सिम्टम जो है शुरू हो जाते हैं लोगों के अंदर। Now remember the significance of that aging population. How many people will be 45 or older in a few years from now? अब आप सोचिए कि जो ग्राफ दिखाया था कि 45 ईयर या उससे ऊपर के लोग जो है उनकी संख्या कितनी बढ़ जाएगी आने वाले सालों में। A variety of studies have shown that these high incidence of diabetes is mainly due to sedentary lifestyle, lack of physical activity, obesity, stress, and diets rich in fat, sugar, and calories. काफी स्टडीज में ये बताया गया है कि ये जो इंडिया में डायबिटीज का जो बहुत बड़ा रेट है वो इसलिए है, संख्या इतनी ज्यादा है इसलिए है क्योंकि इंडिया में ज्यादातर लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो हमेशा एक जगह बैठे रहने का है, फिजिकल एक्टिविटी कम है, मोटापा कुछ बढ़ रहा है, ज्यादा है, और स्ट्रेस तनाव ज्यादा बढ़ रहा है, और लोगों की जो डाइट है, खाना जो है उसमें फैट, शुगर और कैलोरीज की मात्रा बहुत ज्यादा है। This is exactly opposite the principles of optimal health. ये जो हो रहा है ये बिल्कुल विपरीत है, उल्टा है, जो कि हमारे सिद्धांत है ऑप्टिमल हेल्थ के जो बताते हैं उसके। But that's part of what has actually caused the problem with diabetes in India. लेकिन इन्हीं वजहों से इंडिया में डायबिटीज इतनी बढ़ गई है। Changing that lifestyle can make a massive difference in people whether or not they will get diabetes type 2. तो अगर हम लोगों का लाइफस्टाइल जो उसको बदलने में कामयाब हो तो डायबिटीज जो है बहुत हद तक कंट्रोल में आ सकती है इंडिया। There are two main types of diabetes, diabetes type 1 and diabetes type 2. दो टाइप की डायबिटीज होती है, डायबिटीज टाइप 1 और डायबिटीज टाइप 2। They're very different diseases even though they're both called diabetes.
दोनों बिल्कुल अलग अलग डिजीज हैं जबकि नाम दोनों का सेम है, डायबिटीज।